वेलकम है दोस्तों उड़ता पतंग में। तो मैं अंशुमान आपका होस्ट और मैं यहाँ पे ट्रैवल, ड्रोन और इलेक्ट्रिक स्कूटर से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। आज शिवरात्रि के मौके पे चलिए आदियोगी के स्टैचू घूमने चलते हैं, जो कि बेंगलोर सिटी सेंटर से अराउंड 60 किलोमीटर स्थित है। Over 15,000 years ago. लास्ट का 4-5 किलोमीटर्स में बहुत ट्रैफिक है, तो अभी आप देखो यार सामने। पहले तो यहाँ की रोड की हालत बहुत ही ख़राब थी। अभी इन लोगों ने रोड की कंडीशन को बहुत ही अच्छा कर दिया है, तो आपको ट्रैवल करने में उतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो लगभग 6:15 बजे है और हम लोग अभी पहुँचे हैं और ये रहा पीछे आदियोगी का स्टेशन। खट है वो देखो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सनसेट से 15-20 मिनट पहले यहाँ पहुँच जाएं, ताकि आपको स्टैचू के सामने अच्छी सीट मिल जाए, जहाँ से आपका लाइट एंड साउंड शो का व्यूइंग एंगल बहुत ही अच्छा रहे। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, लोग पहले से वहाँ पहुँचे हुए रहते हैं। चलिए आपको लाइट एंड साउंड शो दिखाते हैं सदगुरु के आवाज़ में। उन्होंने महादेव के इस कहानी को बहुत ही अच्छे से लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When intensity peaked, he became utterly. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they call him a yogi, as he was the first one, the adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. Many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." Adiyogi absorbed her and made her a part of himself, and hence he is the Ardhanari, the ideal man, where one half of him is woman. Yogi said, "Just drink of me," which drove them into intoxicated raptures. 7 sages, the Saptarishis, took the sacred science of yoga in all its forms to human habitations across the planet, which turned into crucibles of civilization. Spectacular being is not of the past, but the future of humanity. To move humanity from hallucinations of ups and downs to nameless ecstasies of one's interiority. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।